Good morning. In my previous video, you saw why FUE causes cobblestoning. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा how you can prevent cobblestone appearance in FUE hair transplant. So a quick revision, what is cobblestoning? This appearance जहाँ पे after a transplant you see these small mountains. This is called a cobblestone. ये where the hair comes out, small dots. This is known as a cobblestone. And why it occurs is because FUE grafts में ऊपर स्किन ज़्यादा होती है कंपेयर टू द ग्राफ्ट, एंड वो एक कैप की तरह, क्रिकेट कैप की तरह, बेसबॉल कैप की तरह, हैट की तरह, मशरूम के टॉप की तरह, इट सिट्स ऑन द स्किन एंड इट कॉजेज दिस कॉबलस्टोनिंग अपीयरेंस. सो हाउ डू वी प्रिवेंट? फर्स्ट थिंग आई शोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द साइज ऑफ द पंच. जो हम लोग FUE करने के लिए पंच साइज यूज करते हैं, जितना मोटा पंच साइज होगा, बिगर द कॉबलस्टोन. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू चूज द थिनेस्ट punch size. Normally we choose 0.6 to 0.7 mm depending on the thickness of hair. So choose the thinnest punch size. Secondly, nowadays serrated punches are coming, जिससे as soon as you touch the skin it gives through. इसका मतलब skin press नहीं होती है. The amount of skin coming into each graft is much less. Therefore the cobblestoning will be much less. And third, most important is to do the processing. Every graft must be cut, उसके ऊपर की skin must be taken out, and that is the only way you can prevent. So these three things if you do, then you will not get a cobblestone appearance.